हार्मफुल है, हार्ट के लिए हार्मफुल है। ये कौन सा विज्ञान है, हम पूछते हैं कैसा विज्ञान है। इसका मतलब 20 साल में आपने जितनी जान ले लिया तो आप किस श्रेणी में जाएंगे। इस विज्ञान, ये विज्ञान नहीं। भारत का जो शाश्वत विज्ञान है, जो पहले भी जो कहता था वही आज कहता है। फिर we will talk about the humors, जो बॉडी के humors होते हैं। तो humors तो तीन ही है, तीन ही क्यों रखे गए हैं? The number might be 4, 5, 6 and so on, हो सकता था ऐसा, लेकिन नहीं, because the rationality behind that is bath, pitta and कफ। बाथ का काम है मूवमेंट बॉडी में, जो कंडक्शन है, कंडक्टिंग सिस्टम। पित्त का काम है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड डाइजेशन। और जो कफ का काम है, कफ का मतलब ये बलगम नहीं है। कफ को कहा गया है शरीर का बल, स्ट्रेंथ, कफ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। एंड इफ कफ इज इन द नेचुरल फॉर्म, दिस इज द इम्यूनिटी और दिस इज द इम्यून स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। ये है बेसिकली। एंड यावंता ही मूर्तिमंतो भाव विशेषा लोके तावंता पुरुषे, और यावंता पुरुषे तावंता लोके। ये बोला गया है कि व्हाटएवर इंस्टिंक्ट्स आर प्रेजेंट इन दिस बॉडी, all representatives are present in the environment, and it is a reciprocal thing. How bath comes in the body, and the air, the sun and the moon, they are the sun is the representative of the pitta and moon is the representative of kaf. So this is called theory of low pulse environment, theory of equilibrium between individual and the environment. Then the concept of Panch Mahabhut, the Akash, Vayu, Agni, Jal and Prithvi. Again these are only five. Neither four nor six. Because if anything, suppose Akash means this is space. This is called Akash. We are sitting. But it contains all the four things. The Vayu is there in this Akash. You see the Agni, the temperature is there. Then the Jal, the humidity is there, and the Prithvi means the weight. All the elements are there, but the Akash means there is a predominance of the space. Then the constitution, because the foreigners and other people, they always say कि डॉक्टर साहब हमारा हमारी प्रकृति बता दीजिए नारी को, क्योंकि नारी विज्ञान जो है वो भारत का बहुत विकसित था। तो हमने कहा देखिए नारी विज्ञान विकसित था, लेकिन आज हमारे जो इक्विपमेंट्स आ गए हैं उससे हम और नारी विज्ञान को कुछ चीजें ऐड कर पाएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग हैं या जो गांव के लोग हैं या जिनको जानकारी नहीं, वो सोचते हैं कि नहीं वैद्य जी, मतलब हम तो वैद्य जी नहीं है, डॉक्टर है नहीं, तो नारी पकड़े और नारी पकड़ के बता दें कि हाँ रात में आपने कटहल की सब्जी और रोटी खाया था। तो ये ज्ञान भी, ये भी किसी का मेन है ना। बहुत सारे लोग ऐसे, पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी के बनारस तो वैद्यों का केंद्र रहा है, उनको एक अनुभवजन्य ज्ञान है, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। जो नारी है वो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। और उस नारी को जो आज का जो पल्स साइंस है, वो जो एंशिएंट पल्स साइंस है, वो ऑलमोस्ट सेम है, हमने पढ़ा है दोनों, उसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन स्टेथोस्कोप का यूज करने से हम लोग थोड़ा सा और कुछ जान पाते हैं, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में या इंटेस्टाइन के बारे में, है ना। तो नो डाउट नारी विज्ञान इज वेरी मच साइंटिफिक इवेंट। तो उसमें यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है व्यक्ति का, वो कहा गया है कि शुक्र शोणित जीव संयोगे यो दोषा भवे दुःखता प्रकृति जायते थे। मींस द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिसाइडेड एट द वेरी टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिस समय बच्चा मां के गर्भ में आता है, जिस क्षण, उसी क्षण जीव मींस आत्मा, तो उसी क्षण आत्मा भी प्रवेश करती है। आत्मा कहीं बाद में नहीं आती, डायबिटी तो उसी क्षण ही आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक माँ बाप के अगर 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, अब तो नहीं हो रहे, अब तो 1 या 2 तो होंगे, बट डिफर करते हैं। 4 भाई हैं, 7 भाई हैं, तो उनका चरित्र भी अलग होगा, स्वभाव अलग होगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। भाई होना नहीं चाहिए, जिनकी माँ बाप के हैं। लेकिन उसके पहले की बात भी हमारा विज्ञान जो आयुर्वेद है, जो वेद है, आयुर्वेद नहीं कहेंगे तो वेद है, वो ये कहता है कि ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात् स्यात् गर्भधुमित पुरुषा ऋतु क्षेत्राम बीजानाम सामग्र्यात् अंकुरो यथा। मींस there are 4 factors: ऋतु, क्षेत्र,
लॉजिक बिहाइंड द नेचुरलिज्म। तो क्या है ऋतु? अपने यहाँ पब्लिक तो 3 ऋतु में जाती है, बट आगे आएगी स्लाइड्स में 6 ऋतु होगी, 6। ये देखिए स्टार्ट में जनवरी फरवरी, तो कितने छह जोड़े हो गए? जनवरी 12। तो शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये 6 ऋतु होगी, सीजन। और मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल हैं उनमें भी ऋतु, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो है। तो ये दोनों टैली हो गए ऋतु। देन क्षेत्र में सभी बात हो रही थी जो हमारा ये है सॉइल हेल्थ। सॉइल के हेल्थ को हमने इतना डैमेज कर दिया है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के रूप में। ऑर्गेनिक का यूज हो नहीं रहा है, सिंथेटिक तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज बिल्कुल डैमेज है। जो बैक्टीरिया वहां होने चाहिए वो नहीं है, इसीलिए ऑर्गेनिक को प्रमोट किया जा रहा है। और ये पहले भ्रम फैला गया था कि नहीं ये इनऑर्गेनिक इसको यूज करके हम लोग भी इंक्रीज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो आपने इंक्रीज कर लिया, लेकिन आयु और हेल्थ इन दो को तो आपने नहीं पूरा, उसको तो खत्म किया। तो ठीक है, हम 2 रोटी 4 की बजाय 2 खाएंगे, क्योंकि 2 रोटी तो हम ऐसे ही दिमाग से खा लेते हैं, जरूरत होती ही है, इतना ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्शन, लेट द प्रोडक्शन गेट आउट। वो ज्यादा खाने से खाए लिए ही लोग मरे हैं, कम खा के कोई मरा नहीं, कम खा के लोगों को ज्यादा होती है। तो हम वाटर अब देखिए साल बहुत बड़ी गर्मी फिर बरसात होने लगेगी, तो लोगों ने कहा कि जो सरसों है उसमें माहौल लगेगा, हमारा है। तो अपने पास हम लोगों के पास खेती बाड़ी है, तो वहाँ भी बहुत माहौल लग जाएगा। पिताजी बोले इस बार सरसों पे गई, लेकिन हम लोग थोड़ा पहले बोल दिए थे तो फूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो ह्यूमिडिटी और रेन, बॉडी में भी जो ह्यूमिडिटी है और जो नेचुरल ह्यूमिडिटी है उसकी भी आवश्यकता है। तो क्षेत्र और बीज मींस क्वालिटी ऑफ सीड। लोग उन्नत बीज बोलते हैं, किसान बोलते हैं ना उन्नत बीज ले आइए, लेकिन ये साजिश करने में मुझे लगता है कि उन लोगों ने हाइब्रिड गेहूं, हम लोग देसी गेहूं थे, जिसमें की जो एलर्जन फाइबर्स हैं या जो एलर्जेंस हैं, केमिकल्स हैं, वो बहुत कम थे, हार्मफुल इफेक्ट कम थे। जब से हाइब्रिड ब्रीड आया उसके साथ में ये गाजर घास जो आई, अमेरिका ने हमको भी दे दिया, बहुत चीज अमेरिका ने दिया हमको, भारत को। तो उसके साथ गाजर घास आई। गाजर घास की वजह से इसके डिसऑर्डर्स पूरे देश में इतना ज्यादा बढ़ा है कि सब दवाइयां फेल हो गई हैं। एलर्जी की दवाइयां, क्योंकि गाजर घास पूरा हट नहीं रही है और एलर्जी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ब्रैंकियल और स्किन एलर्जी। तो बीज और जब अगर आप मेल फीमेल को एक तो क्वालिटी आपकी इस पर एंड वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को कच्चे चीनी कहते हैं, इस पर प्रॉब्लम होती है ना, जैसे प्रॉब्लम दुनिया में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम लगभग 22 कंट्री में हमारा लगभग होता है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गिमिक्स बहुत ज्यादा दुनिया में, क्योंकि भाई दीदी को पढ़ना चाहता है और नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हों, ये बहुत बड़ी समस्या। और बच्चे स्वस्थ हो, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो तो डाइट इसके ऊपर हम चर्चा करें क्या हमको लेना है। देन निद्रा नींद जो हम लोग लेते हैं, और ब्रह्मचर्य मतलब नहीं है कि लगभग भैया पाठ करते हैं। कई जगह हमने लेकर ब्रह्मचर्य अंग्रेज हमारे को मालूम रहा होगा जो बताया तो उसको क्योंकि सब कोई भी 100% सही भी नहीं रॉन्ग भी नहीं। तो उनके सिस्टम प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंट नहीं किए। 2014 के बाद से चीजें आई कितना आया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 मंत्र दूसरे वाले बताया, 7 मंत्र में 15 नंबर थे, डर
इसलिए जो कंपनी है उनकी जो इकोनॉमिक जरूरत है वो अमेरिका यूएस सबको मालूम है और वो दे आर कैपेबल टू डिसमेंट एनी गवर्नमेंट ग्लोब उनको इतना पैसा उगाड़ के सरकार को लड़ सकते हैं। इसीलिए देश से और से सामना करना अच्छा समझना वो जरूरी है बाकी डेवलपमेंट को कर रहे हैं। तो एक तो ये दूसरी पास चिकित्सा पूजा पाठ करना पड़ता है, थोड़ा पूजा पाठ करने से कुछ नहीं। देखिए बात करने से एक लाइन बता दिया हूं कि ये सारे काम का इसलिए आपका आवश्यक मतलब टेस्ट यूजुअली खट्टा मीठा नमकीन मोस्टली यही आता है नेचुरल बट देयर आर 6 टेस्ट। एक तो मधुर मीठा आम्ल रस खट्टा लवण मतलब की जो नमकीन देन पंजेंट का है तो जैसे काली मिर्च लाल दालचीनी पंजेंट देन स्वीटर्स अब आगे हम बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें किसी भी आप लो करना और काव्य है डिजिटल चीजें और लास्ट वाली एस्ट्रिजेंट जो कि जैसे गिरी है दामू है ना, तो ये कसा टेस्ट बॉडी थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये देखिए जो हमने बताया था कि जावन का हिमोटो का बोलता देखिए अनिल सूर्य एंड सोमा ये पैरामीटर के बाद एक यानी क्या है बहुत बात ध्यान रखते हैं हमारी नगर करके इसमें 16 बताया हमारे यहाँ 1000 BC मतलब लगभग 22 मोर देन 800 इयर्स हो गया। लेकिन हम लोगों ने आज नहीं इसलिए नहीं 16 बताया। ये तो क्या है ये देश सुधार के है क्या है। अब चीजें इतिहास को लिखा जा रहा है कि चीजें यहाँ अभी टेक्नोलॉजी सब हुआ है। ये से है ज्ञान अपने पास था लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा मिला है। मेडिसिन हमारा जो आयुष सिस्टम है इसके बारे में बहुत ज्यादा ही बोलेंगे। चैलेंजेस व्हाट आर द चैलेंजेस है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस क्योंकि इंडिया में क्या है अपना बेटा और दूसरे की सबको अच्छी
तो भारत में यही है, हम बोलेंगे छोड़िए, अगर वही योगा में आया 2015 में तो आपके बारे में जाने 21 जनवरी से जून उसके पहले भी लोग था, लेकिन कोई साथ तो बाबा देंगे बहुत लोग उसको कहते हैं बट ही इज ए गुड मैन जो अच्छा कर रहे हैं और नंबर से वो कम हुए हैं। इसका नहीं कम हो जाता तो ये सांस से ये समझा क्योंकि दवा से इसका इलाज नहीं होता है बात को सब लोग समझते हैं। दूसरा क्या है कि प्रिवेंटिव आप देखिए कैसे टाटा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ, फिर हमारा हॉस्पिटल हुआ, हम लोग का लोकल हॉस्पिटल है, फिर ट्रामा सेंटर है, एक कैंपस में 5 हॉस्पिटल तरह। लेकिन उससे काम करने वाला कोई रिड्यूस द रेट ऑफ डिजीज। हम किसी बीमारी की करने जा रहे हैं, कैंसर क्या नहीं पड़ रहा और किस बीमारी का इलाज हम कर पा रहे हैं जब स्टार्ट हो रही है लाइफ लॉन्ग तक मुक्त प्राप्त और ये देखिए जो भी वही मेडिसिन है ना, बॉडी तो अच्छा करने वाली सही करने वाली। आप बताइए किसी को डायबिटीज इसलिए नहीं लगता है कि हम लोगों का जो हमारी उसका विश्वास आयुर्वेद शुरू से होता है अपने की दाल कहाँ से हम बताएंगे टैबलेट वाली मेडिसिन में ज़्यादा मिला हम लोग यहाँ तो अब समझ में आ रहा है कि कोई भी इमरजेंसी होती है आप जाइए, ठीक है आईसीयू टेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद ट्रामा है एक्सेप्ट ट्रामा है। चाइना में क्या है, अगर ये दोनों नहीं है, अगर ये एंड नहीं है एंड देयर इज सफरिंग ऑफ तो गलती चाइनीज वहां का लोग कहते हैं चाइना में पास जाता है। DRC है गो डायरेक्टली टू दी एलोपैथी। कितना उन्होंने कंट्रोल किया। हमारे यहाँ क्या है गांव का झोला पहले उसके पानी लगी है कितनी HIV नहीं तो ये ये देश में लेकिन अब पब्लिक की जागरूकता हटा दीजिए गुड। तो इस तरह से बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर साहब की दवाई जो है दवा भी सही लेकिन उसका वो इसमें है इस वजह से क्यों कोई भी रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे तो मरीज को बताना कितना भी बताएंगे किसमें मिली कमीशन ले रहे हैं तो इसीलिए दवा तो ये भी एक चैलेंज है तो इस तरह से Then the opportunities क्या है हमारी opportunities ये है हमने तो बताया कि ट्रॉमा और इमरजेंसी के अलावा आर्थिक सिस्टम में डायरेक्टली मत जाइए
हम तो ऐसे संस्थान में हैं हमारे पेशेंट कराते हैं और बहुत बार उनके पेशेंट ज्यादा जो कि इनके तुरंत एक साल हो गया दवाई कर तो बोलता है तो डॉक्टर बोलेंगे एक साल आप क्या कर रहे हैं एक साल में क्या बताएं इतनी डेंजरस कि वो घटिया तो आपका जाना ही आराम है। तो इस तरह की इसलिए वो पब्लिक को तो दूसरा है मेडिसिन चलती है हम लोग कैंसर के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं एक श्रीलंका की लड़की उसके माउथ कैंसर हमारे अंदर पूरी हो गई उसकी पीएचडी भी हो गई इतना ही काम उसमें था रेडिएशन और देने के बाद ना ड्राइनेस ये हो जाएगा ये बताया ही नहीं है ना तो बिल्कुल सूख जाता है की दवा है उसका है एक घंटे पे लेना पड़ता है दिन में 24 बार और जो हमारा गोमूत्र से बना हुआ किया उसको 3 से 4 घंटे पे उसका ड्राइनेस इतना ही काम और आपको बता दें हमारा मंगलवार रहता है इतना अच्छा लेकिन बहुत सारे आए खाना लिया उपवास कौन करे लेकिन उपवास के ऊपर कांसेप्ट हमारा है हमारा और काम उसी की रोटी भी खा रहे लेकिन जो नोबेल प्राइज मिला इसी को मिला हमारे कांसेप्ट कि उपवास करने से फास्टिंग से सर कुछ संदेश है बस जो अच्छी चीजें जान लीजिए नहीं तो एक साल का मौका आएगा तो जो उपवास कैंसर बॉडी में सबसे बनती है लेकिन ये सिस्टम है जो कि दबा के रखता है या तो उसने ये बताया कि उपवास कैंसर से तेजी से नहीं तो सभी में उसी पे उसको नोबेल प्राइज मिला बट इंडिया हमारा लेकिन हमने नहीं उसको तीन और चीजें दो तीन चीजें हम बता के ये एजुकेशन के जो हम योग प्राणायाम कर लेते हैं लेकिन बॉडी का बॉडी ओनली बिलोंग्स टू आयुर्वेद क्योंकि कोई ऐसी सिस्टम जिसमें के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एजुकेटेड बेसिस उल्टी करवाना दवा माइंड करके देन परमेशन नस कुछ साइनस और प्रॉब्लम के लिए देन बस्ती मेडिकेट एडिमा लेकिन वो एडिमा नहीं है और एक ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली लास्ट ईयर हमारा एक्सरसाइज हुआ थेरेपी के ऊपर है तो यस बस हम 2-3 मिनट कम करेंगे दूसरा एक पार्टनर जिसके ऊपर 10 साल काम कर रहे हैं और इसके ऊपर 8 लिटरेचर तो लिखा चुका है तो इसमें तो देश और देशी और कांसी का जर्सी को हम लोग संघ की भाषा में भी बड़ा दाई हमारा तो गाय दो और जो अंग्रेजों ने बनाया इसको दूध के लिए के लिए नहीं मांस के लिए बनाया क्योंकि हमारी जो गाय है इसका वेट 500 लगभग बहुत बड़ी नहीं और वो गाय के लिए बना दिया स्टील में ऑस्ट्रेलिया गया रसिया गया वो देखा बड़ी गाय 60 लीटर पर डे तो वो क्या है कि आप उनका जो है वो अंग्रेज वो कर्ड खा लेंगे लेकिन मिल्क है उसको ड्राई के गरीब देशों में सभी जगह वही और जो लोग है वो जब छोटा बच्चा होता है लेके मान लो बोलते हैं कि जीरो
6 महीने लैक्टोजेन 2 बहुत चाहो लेकिन उसमें ये जो गाय नहीं कर रहे किसी और बता दें इसमें इसके दूध में केमिकल अमीनो एसिड उसका नाम है हिस्टाडीन। आप लोग नेट पे देख सकते हैं। एंड हिस्टाडीन से हिस्टाडीन अगर बढ़ेगा तो एलर्जी होगी और एलर्जी और ऐसा सूजन कहीं भी एलर्जी ये तो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि कैंसर खतरनाक बीमारी मोटी बात इसके ये तत्व है। बट जो आज की डेट में आयोग का पहले हो गया था सरकार के बाद थोड़ा सा सेट किया है। तो इसके मिलके गाय का दूध पीला क्या एलोइस माने पीलापन जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस गोल्ड लेवल आयनिक फॉर्म। तो बहुत कम मात्रा विटामिन की मिनरल्स की जरूरत बॉडी कम होती है और उसकी वजह से भस्म की जरूरत होती है। भगवान ने अपनी गाय में दे रखा है लेकिन इसको हम लोग पहले नहीं जान पाए। और आज के 60 साल पहले हम लोग देखते थे हमारे यहाँ दो गाय 4 बैल इतना थे बचपन में। तो बाइक वाले लेके आते थे। तो बोले अरे गाय वाला लगेगा तो 20 लीटर दूध। तो ठीक है लोग फिर 50-60 लग गया जानने में कि ये दूध क्या है वाइजनस में पैदा हो गया है ना। लेकिन इसके लिए अभी मिला है वाइट रेवोल्यूशन। सो एक क्रांति होंगे तो उसको लेकिन लोग उसको वाइजनस ग्रीन उसको ठीक है वो क्योंकि इससे हम 2000 खाएंगे ना मतलब जहरीला नहीं खाएंगे। और चीजें बता के मैं बहुत लिए इसमें हो गया दूसरी चीनी 5 चीजें ऐसी हैं पूरे विश्व में भारत में हर की बीमारी है। मिल्क में मैं लोगों ने अपना बनवाया है कि जर्सी का दूध या का दूध बहुत सारी कंपनियों का नाम लेना ही बर्बाद जाके 50% लोग बोल रहे हैं। तो वो दूध जो है मत पीजिए। भैंस का चलेगा वो भी A2 मिल्क है। देसी गाय का लेगा गाय को पालिए लोग पालते हैं क्योंकि दो गाड़ी है हमारी तो ये काम कोई नहीं अपने संस्कारों को ये मिलेगा आपको। अगर आपके पास नहीं है दूध और दूध है उसमें वहाँ पे एक माने ले गया तो दो की सोडा मैंने पूछा सोडा इसलिए पी रहे हैं खाली नहीं था सोडा इसलिए अल्कलाइन बॉडी तो बॉडी अल्कलाइन करने का हमने कहा कि अंग्रेज इन्हें से किडनी में हो जाएगा सोडा पीने के लिए सोडा नहीं है हमारा जगह पे था तो हमारा देसी गाय का मूत्र उसका ये डायरेक्ट नहीं पीना बट जो है वो मूत्र सोचिए बना रहे इसको तो उसका pH है 9 का मतलब कि हाईली अल्कलाइन। इसलिए गोमूत्र की मात्रा जो है 10 ml एंड दैट एक गिलास पानी डाल के लेंगे। ये मिश्रण है आज की गया तो वो तो हमारे खाने से हुआ है। और जहाँ ब्रेन जहाँ कहीं भी चर्बी या वो खत्म गोमूत्र का करते हैं उसके ऊपर हम केवल अनुभव देने का नहीं कोई बेस बना रहे हैं। देन उसके बाद हम थोड़ा सा घी की चर्चा करेंगे। घी के बारे में हम डाला जाता है या अंग्रेजी का द्वारा हो सकता है डॉक्टर को उनकी डिबेट कर सकते हैं। तो ये बताया तो घी पहले जाती है एक किलो घी बनाने में लगभग 20 लीटर दूध लगता है। 20 से 25 लीटर दूध
20 लीटर कीमत दे लीजिए तो मुझे लगता है 60 से 80 लीटर शुद्ध दूध मिलेगा इससे कम में दे देते हैं 4-5 वहाँ स्वांता शुद्ध के लिए तो कितना लगता है। तो अब ये बताइए कि 850 केजी का घी कोई भी कंपनी पतंजलि से लेके कैसे देगा भाई 800 का घी वो भी नहीं सकता है, निश्चित रूप से उसमें एसेंस वाला है, पाम ऑयल लगा हुआ है। इसलिए निवेदन है कि अपने घर में जगह का मंगाने के लिए भैंस का मंगाने के लिए जिनको सोचना है वो गाय कुत्ते को हटा और मलाई निकाल के घी बनाने की है वो खिलौना की फर्मेंटेड घी मतलब जो अब जो उसमें में तो नहीं पाएंगे बट को बॉयल कर जमाइए दही को रख दीजिए दही को दवाई बटर वो खिलौना घी सुपर फर्मेंटेड बहुत सारे घरों में क्या है लोगों को मलाई निकाल के पिघला दी इट इज अगेन हार्मफुल। और दूसरी बात है तीन बात कहना है कि 5 से 10 एक चम्मच घी पिघला हुआ घी हमेशा पिघला हुआ खाना घी जमा नहीं करना गरम करिए चम्मच घी लिक्विड क्योंकि ये तो सेमी सारे फॉर्म में रहता है। तो 10 ml घी देसी गाय का और कोई दूसरा घी नहीं वो सब खाइए क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन लिपिड और बनी है और जो फर्जी घी खा रहे हैं समोसा चाट ये इसको कोई बताता है। डॉक्टर से आते हैं शाम को भाभी ले लो चाट पकाने हम एक दिन पूछे काओ भाभी जी को लेके खिलाए बोले अरे चावल खाने के लिए तो जिस खराब है आप समझिए जितने दिन है उतना ही उम्र है क्योंकि आज में पानी पड़ गया 1 लीटर पड़ गया उसके बाद पड़ गया वो खींचे ले जा तो उस तरह की फैट्स तो ट्रांजिटिंग पाएंगे तो ट्राई का बढ़ेगा तो आपको बेचैनी होगा माइनस एक्शन है। तो घी के बारे में जो आते हैं वो सबसे अच्छा तेल है तेल का मतलब तेल है ये अथर्वेद में। तो तेल का बेस्ट वन 150 रुपए का घी का तेल और 3 आपको मिलेगा। और मस्टर्ड सबसे कितना तेल है उसमें 30% पाम मिला हुआ है मिनिमम 30% कुछ कंपनियां ज्यादा मिला है डोंट यूज दैट। हमारा एक मैसेज है यू रिफ्रेन योरसेल्फ बैक से आप रिफ्रेन से एक चीज लास्ट में गेहूं खाते हैं वो इट इज वेरी डेंजरस लाइक राइस तो गेहूं तो आप बहुत पैसे में डालसा तो खाते हैं चावल नहीं खाते हमने कहा बहुत अच्छा कर सुगड़ी होगा कि नहीं होगा तो गोजई खाई जाती है लोग क्या खाई जाती थी। तो जॉब अगर एक केजी आटा है आधा किलो जॉब थोड़ा हाइब्रिड लेगा वो तो मिलेगा नहीं कोई बात नहीं और चना मिनिमम इसीलिए देखिए सरकार इसी बात ऐसे कहती है पूरा दावा वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हाँ मंदी अभी बोलना है मोदी या योगी जी को बताया तो 12 लाख हम तो बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत फिर हम कभी लिया जाएगा। धन्यवाद। प्रोफेसर बहुत धन्यवाद। ह्यूमन इज द स्पाइस ऑफ लाइफ और आपका क्या दोनों का हमने आनंद लिया। मन तो हमारा भी लेकिन हम राशि आएंगे आपसे और just for condition this is a book called Beach Belly and this book has been written by a European Western not an Indian Beach Belly लिखा हुआ पेड़ आप पढ़ लीजिएगा समझ ऐसा कि डॉक्टर सही बोला गेहूं से पेट चावल से नहीं।
I would like to welcome Dr. Kumar, correction. Dr. Sir holds a string of degrees all in computers, during all from the University. 2008, he completed from CA from the Chief London Open University. He's already done his PhD in 2003. Has been a professor in computer science 2005-2020. Sir is a prolific writer and speaker in the field of computer science and technology, with many journals, seminars, blogs, conferences, credit. I was just looking at it online, and I could not help but get impressed. It is really very long. Spanning a decade. Please welcome Dr. Shasar, sir. Thank you. जीतो सर First of all, very thankful to organizers that they are giving me a chance to basically this CNN and Dias is having a collection of sociologists, management people, educators, and the learned speakers face certain concerns of societal issues. I've heard different speakers talk about that. But since I'm from computer science, my area is something different. I want to clarify that we can give answers to such problems. And here the potential power of CNN, which is the greatest nowadays, and I'm keeping those who want to connect with me. I'm here available at the university, and my contact number are already available. You can have certain connections with me regarding research and education. So I'll start human brain. Human brain is I think best thing in the universe that God has created. And when we talk of technology, we say that human brains have millions of connected neurons that work together to learn information. And when we talk about deep learning, which is the topic I'm going to start. So deep learning features neural networks constructed from multiple layers of software code that work together. So from where this deep learning came, I'll talk about deep learning is a subfield of machine learning that realizes neural network as its primary operational framework. When we talk about neural networks, can be considered such as biological or artificial. They play a very crucial role in deep learning.
So neural network consists of the nodes of neurons that process data and generate output of the text of artificial neural networks. Now these nodes perform computations similar to the neurons in biological brain. So as we decide things, neurons play a crucial role in that. So these are the common buzzwords nowadays. We have AI. Through AI, we have come to machine learning. Through machine learning, we come to neural network, and from neural network, we came into deep learning. Again, in deep learning, there is a part which is called as CNN, which I am going to handle today. So this is now when we talk about deep learning, so deep neural networks are made up of several layers of linked nodes, each of which strengthen the one before it to improve and optimize the classification or prediction. So the areas which we handle is classification and prediction. And there are different terms like back propagation which we use in neural networks. Those are utilized in deep learning. So again, if I want to classify, deep learning can be classified into supervised deep learning, unsupervised deep learning, hybrid deep learning, reinforcement deep learning, all just like machine learning can be classified. Again, reinforced deep learning can be classified into value-based, policy-based and model-based. Now, I am coming to CNN. Now what CNN is? When we talk about CNN we call as, these are the today's building block of for classification. Which these are the these image classification are the tasks which use machine learning algorithms. Another very useful task that these CNN things utilize, that they perform before classification, that what is to extract with the help of relevant features from an image. Now, feature extraction is the way CNN recognizes key patterns of an image in order to classify it. Now, I'm keeping this short with an example that from where this deep learning or a CNN came into picture. Suppose, when we talk about deep learning, it enables a computer to learn by example. Suppose एक रोबोट को हमको सिखाना है कि ये कैट है या ये डॉग है, तो हमको कैसे सिखाना होगा? So we come to humans as we do in our homes. घर में बच्चे होते हैं, toddlers are there. So to understand deep learning, imagine a toddler and whose first word is dog, objects, and he becomes more aware of features that all dogs possess. So classification can be done based on features, and that is the basic area where CNN can be applied. Since I'm in research and we are doing with certain medical image classification, in which we are just going through detect laryngeal cancers. So what sort of cancers, how to detect that? What we do, we first collect certain images of cancerous elements of a specific area, and then we teach that computer through certain algorithms that these are the cancerous elements by just keeping them in order. And then what we do, we just give them that this sort of cancerous elements can be present where cancer can be detected. Now, when another picture comes in, it justifies that from this earlier pictures, it just generates that this is the portion where cancers are there. So this is one of the experiments with which we are doing. There are various applications. I'm keeping my talk short. These are components of CNN
basically they rely on feature extraction and hierarchical representation to comprehend intricate patterns in the data. This is the actual feature extraction algorithm works on. That is the input image. Through input image, we extract region into this, and there CNN works, and then through that we classify different elements. So from a picture, different elements can be checked out where a particular thing is that. So there are various areas. This is the basic hierarchical representation of learning, how our brain works. So my talk is about where CNN can be applied. So there are n number of areas where CNN can be applied. This is the landscape where CNN is already working. Neuromorphic computing, cognitive cybersecurity, robotic personal assistants, autonomous surgical robotics, next generation cloud robotics. These problems are handled through CNN. Just as I told you, the main area where CNN is used is image classification and object recognition. Now, CNN basically does the image-based classification algorithms, and it can automatically learn and extract complex characteristics from raw picture data. They have become extremely popular nowadays. In medical image analysis, the CNN is used. In corona times, we have lung images like this. It can already detect through images whether the person has pneumonia or not. So the ability to categorize medical pictures accurately is crucial for supporting clinical care therapy. To categorize pictures, CNN examines images and extract characteristics by enhancing the discriminable features for classification from them. So there are certain examples I have given. I am not going into details. Similarly, CNN can be used for autonomous vehicles to detect pedestrians, to detect other objects while driving. So pedestrian identification, lane detection, redundant item detection at intermediate distances have become major applications of CNN-based systems. So we can group into these parts. Firstly, it gives perception and localization. Then it moves on to higher level path planning. Then behavior attribution. Then motion controllers. And finally, your autonomous vehicle has all these features, and it can be classified into autonomous vehicle thing. So it is used in games also. Similarly, image-based product recognition and recommendation is another area where deep learning algorithms and CNN is also used for classifying and recognizing product images. Deep learning is quite advantageous since demand prediction is most prevalent and significant use of e-commerce businesses in their everyday operations. E-commerce companies catalog you are viewing nowadays, like Amazon है, Flipkart है, there are n number of companies. और हर जगह कैटलॉगिंग के लिए आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और इनको अगर आप मैनुअल करेंगे तो इट विल टेक टाइम. सो टाइम भी होगा, एफर्ट्स भी होंगे. उन सबको करने के लिए अब CNN एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है. जैसे नई इमेज सर्च करने के लिए आपके पास इमेज दी गई, यू विल एक्सट्रैक्ट, CNN उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा, कंप्यूट करेगा सिमिलरिटी बाय CNN एल्गोरिथम्स, एंड फाइनली आउटपुट क्या करेगा, लिस्ट करेगा सर्टेन इमेजेस. तो जिस भी तरीके की इमेजेस आपको चाहिए होंगी वो यहाँ पे आपको दिखेंगी. तो मेनली जो अलग अलग एरियाज है जहाँ पे CNN यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और लोकलाइजेशन के लिए, बहुत एरियाज में यूज किया जाता है. कुछ एक और इसकी टेक्निक्स है, जैसे यू माइट हैव हर्ड अबाउट यूरो, दैट इज अनदर थिंग व्हिच इज यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग. यू ओनली लुक वंस. एक और फास्टर RCNN, इस तरीके की और एल्गोरिथम्स हैं जो कि इसको और इनहांस करती है.
जैसे यहाँ पे आपके पास एक इमेज है और जितने भी ऑब्जेक्ट एडवांस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स हैं दे आर बिल्ट अपॉन CNN। और इसमें आपने क्या कर रखा है, पहले से बता रखा है कि इस तरीके का ऑब्जेक्ट का ये शेप होगा और CNN एल्गोरिथम हम अप्लाई करेंगे। नाउ दिस विल डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स और आपको एक पिक्चर में बताएगा ये चीज यहाँ है और ये चीज यहाँ है। तो इस तरीके की इमेज क्लासिफिकेशन आसानी से की जा सकती है। सिमिलरली इसका एक और यूज किया जाता है फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक्स में। आपको मालूम है तमाम जगह कैमरा लगे रहते हैं और सिक्योरिटी पर्सन में जब आदमी जाता है तो अपने फेस को छुपाने की कोशिश करता है, जिसको बचना होता है। सो अलग अलग एंगल से जो इमेजेस मिलती हैं और आपके जो फेशियल लुक है और जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है उनके थ्रू हम एल्गोरिथम्स को यूज करके CNN के थ्रू पर्सन के फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और हम सबसे पहले करते क्या है, पर्सन की फेशियल इमेज ले करके उसको कन्वोल्यूशनल लेयर्स के थ्रू पास करते हैं, कूलिंग लेयर के थ्रू पास करते हैं, उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद एक फुली कनेक्टेड लेयर के थ्रू की पॉइंट्स प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ना ये की पॉइंट प्रेडिक्शन आपने देखा होगा, शायद कभी CID में देखा होगा कि वो किसी की पिक्चर से उसका फेस बनाते हैं। So this is the area through which that actual face can be constructed. So the automated facial recognition system is widely used to track attendance in businesses, schools and colleges. और भी जगह हैं जहाँ पे किया जा सकता है और इवन सिक्योरिटी में जहाँ पे भी सिक्योरिटी के इश्यूज है वहाँ पे इनका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। इवन एक और एरिया है कंप्यूटर साइंस का जिसको हम NLP कहते हैं, वहाँ पे भी CNN का बहुत यूटिलाइजेशन है। CNN को हम NLP में और वीडियो एनालिसिस में भी करते हैं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है हायरार्किकल पैटर्न्स इन डेटा और ऑटोमेटिकली लर्न करता है जो रिप्रेजेंटेशंस हैं और जनरलाइज करता है इनको इफेक्टिवली टू न्यू केसेस। सो टेक्स्ट डेटा को हो चाहे इमेज डेटा को हो चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो है, सबके डेटा से एक्सट्रैक्शन की चीजें CNN एल्गोरिथम्स आजकल कर रहे हैं। मेनली इनका काम क्या है, एक तरीके के पैटर्न्स को जनरलाइज करके बताना। जैसे NLP में अगर आपको गूगल में जाते हम सिंपल टाइप करते टेक्स्ट को तो अभी तक खाली टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस थे। अब गूगल ने कुछ और टूल्स और बनाए थे सिंपल गूगल के अलावा, जो कि आपको लार्ज लेवल पे आपसे रिलेट करते हुए जो आपने टेक्स्ट दिया है उससे रिलेट करती हुई चीजें दे रहे हैं। वो कैसे करते हैं, बाय आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी चीजें आपको लिस्ट हो सकती है। तो आप किसी एक एरिया में काम कर रहे हैं उस तरीके के कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। अभी तक तो हम वो टेक्स्ट ढूंढ रहे थे, वो खाली सर्च के फॉर्म में मिल रहा था, अब वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग होती है और इस तरीके की चीजें भी CNN के थ्रू पॉसिबल है। कंप्लीट टेक्स्ट भी है और इमेजेस के क्लासिफिकेशन भी है, वो भी आपको यहाँ से मिलती है। इसके अलावा वीडियो एनालिसिस में बहुत सारा रोल CNN का है और मेनली वीडियोस के थ्रू, जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं और अपने वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस के थ्रू हम सपोज करिए कोई कैंसर पे काम कर रहा है तो कैंसर से एलिमेंट कहाँ है, तो हम क्या करते हैं उसको पहले आउटलाइन करते हैं उन एरियाज को और उस वीडियोस के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग जगह सेव करते हैं। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं और जब इस फीचर एक्सट्रैक्शन को हम किसी नए वीडियो में सपोज करिए रियल टाइम, आप थोड़े टाइम बाद मैं बताऊं इस पे काम करें, लैरिंजियल कैंसर्स के ऊपर काम करें, तो थोड़े दिन बाद इसी एंडोस्कोपिक जो जिससे की जाती है वो जो एलिमेंट होता है वो जो जाता है वही पहले लेवल पे प्राइमरी लेवल पे ये डिटेक्ट करके बताएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है या नहीं। तो उससे फायदा क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को बहुत सारी चीजें दिक्कतें होती हैं, अलग से मेडिसिन लानी पड़ती हैं, वो सबसे बंद हो जाएगी क्योंकि वो एलिमेंट जाएगा और पहले लेवल पे प्रेडिक्ट करके आपको बता देगा कि ये कैंसरस हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर रोबोटिक्स एनवायरनमेंट में CNN को यूज किया जा सकता है। ठीक है, रोबोटिक्स इसलिए क्योंकि अभी तक 2D विजुअलाइजेशन होता था। CNN can assess the depth of objects in the scene to comprehend the 3D structure of the surrounding and save trajectories. So अगर किसी रोबोट को कहीं जाना है, किसी आर्मी मिशन पे जाना है और वहाँ पे उसको पता करना है
की डेप्थ कितनी है और किस तरीके से कितने लोग हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उन जगहों पे भी हम डिसीजन मेकिंग की जगहों पे एनवायरमेंट के परसेप्शन के साथ में यूज कर सकते हैं CNN एल्गोरिथम्स का। फिर फार्मर्स के लिए जो आजकल बहुत बात हो रही थी कि एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी 3D ऑब्जेक्ट सीन को कंप्रेहेंड करके बता सकता है सराउंडिंग में, और एक इफेक्टिव कोर्स ऑफ नेविगेशन सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं ताकि पता कर पाए कि खेत का क्या साइज है, उसके हिसाब से किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसमें पानी क्या है, और जगह जगह मॉनिटरिंग टूल्स लगा करके ये पता कर सकते हैं कि वाटर लेवल क्या चाहिए और इस समय वाटर लेवल किस तरीके का है। तो ये सारी चीजें भी इन एल्गोरिथम्स के थ्रू हो सकती है। सो CNN के थ्रू हम एनवायरमेंट को भी मॉनिटर कर सकते हैं आजकल, क्योंकि हमको मालूम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, लोग तमाम सारी बातें कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है घटता जा रहा है, AQI बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी जगहों पे भी एक एक्चुअल एक्टिव एनवायरमेंट मॉनिटर की तरीके से भी CNN एल्गोरिथम्स का यूज किया जा रहा है। सो बहुत तरीके की फ्यूचर डायरेक्शंस हैं, आप देखें तो इनमें मेनली है लार्ज स्केल, अगर हमें बैलेंस डेटा सेट मिल जाए तो हम AI असिस्टेंट तमाम तरीके की चीजें बना सकते हैं। यूज ऑफ वीडियो डेटा फॉर मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जा सकता है, डेवलपमेंट इन डेटा प्रिपरेशन टूल्स यूज किया जा सकता है, और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। सो इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क, though I did it very short and I think thank you. If there is any query you can ask. Thank you, Professor. Although most of what you were telling was Greek to me, and I could not make liberty of it, but anyway. Thank you for enlightening us. Next in line is we have Dr. Sanjeev Shukla sir from BSNB PG College. Sir is the head of the Department of Geology at BSNB PG College, Lucknow. He is a patron of geology education and a professor level 14. Sir is a living legend in the field of geology and geo-research. May I now invite Dr. Sanjeev Shukla sir on stage. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me to talk here. Basically, I am a biologist working on freshwater problem in laboratory toxicology of chemicals since 40 years. There is only one lab in our area in which we are working. The first question is why are we here? To interact with the technologists, to interact with the management concepts. In my opinion, the hybrid species, they are unproductive. But
but the hybrid subjects, they are overproductive. So there must be the hybridization of disciplines. So we can get something more. I have chosen a topic different from my discipline. Why I have chosen this topic? Because if you see anything in the science, this has been established that it has flow from the West. And this is the basic problem we are facing since a long. That's why I have made this PowerPoint deliberately in Hindi. Because most of the words, every word has its own philosophy. You cannot translate every word. You can translate, but cannot translate. That's why I have made this presentation in Hindi. So the problem is this, how I encountered this problem. मैं थोड़ा मिक्स बोलूँगा इसमें, क्योंकि तमाम चीजें रीति रिवाज में I can quote just for example, after degree, a composition was given to a woman, and we thought that it is a simple ritual of our family. But accidentally I encountered that and found it is a medicinal composition. Then my interest grew in the literature that were science processed. And we were surprised to know after 1857 Britishers made two legislations. One they banned the Indian education system, and other they banned the Indian education system, and they deliberately coined the term alternative medicine, which was not alternative. And wherever science existed, that's why I have taken a stalwart of Ayurveda, though I am not a person of Ayurveda, who was a teacher par excellence, innovator and researcher. That is my object, to tell you why I have taken this topic. As you all know, Ambalika is going on just in search of our ancient traditions in science. So we'll talk about the Maharishi Shushu. He was a man who was a descendant of Maharishi Devadas from Basra. There are two separate disciplines, Anutari Sampradaya and Atraya Sampradaya. Atraya Sampradaya is for the physicians and Dharmatari Sampradaya is for the surgeons. And in this, he was a student of Maharishi Devadas. And the two stalwart books, which you call the Charak Samhita and Shusha Samhita, they were nothing more than notebook, class notebook of these two students. They are not the renowned literature of the language. And the Britishers, particularly, how they infused the idea in our brain. They wrote that there was no Shushu, it was only Socrates. It was first the American Bauer who got the manuscripts and the Russian-China border and sent to the Asiatic Royal Society, Asiatic Society for the translation. Sir Harley translated it and validated it. Before that, how he fooled us, before that, there was an operation of clothes, reconstruction of clothes which we know today as a rhinoplasty. On the streets of Pune, and it was published in the Second in Britain in 1794. And they were trying for a long time, but it was not successful. And they named it Indian flag. On one hand, they named it Indian flag. On one hand, they rejected it. So, the time frame in which the Shushu Samhita was made, Harley actually conceived that the Bodhisattva described the Shushu Samhita and Shapad Brahma was saved. So he concluded that it was of 600 BC. But later it was clear that it is older. And if you see the internal reference of the Shushu,
Then at that time, month Kartik was in the Sharad, but now it is in Hemantri. But if you see the solar equinox, after every 2000 years, the lunar month shifts. Right? So if you calculate, the time ranges 200 to 2000 to 3000 BC. This one should consider. Now we will discuss some of the aspects of the Shishul. He was a teacher par excellence. At his time, the course was of 6 years, and he trained the students of surgery on various vegetables, the mud structure with the leather boxes, and he was the first person who used the models in the teaching of the medicine. You will surprise to know that models, teaching through models, was described as a British thing, but you are the first teacher of the world who used the models. And the Hippocratic oath, which is a common for the medicine students, in Shushu Samhita, the oath which has been written, along with the student, teacher also takes अगर मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं तो मेरी सारी विद्या व्यर्थ हो जाए। क्या आपके ऐसे एजुकेशन सिस्टम ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध है? Now the second we will discuss, because you are the person of dissection, which we use very much in our biological labs, and it is the concept that dissection came from the West. If you go through the Shushu Samhita, I have given the reference here. He described how to prepare the cadaver for the dissection diagrams. But the diagrams are available in our ancient temples, who were made long before the British. I will show in my presentation. Now, in Shushu, as a surgeon, he described how to make the instruments, what metals should be used, how to hone them, how to sterilize them. Sterilization was first described by Shushu in the whole world. And rhinoplasty, surgery of the nose, which we say plastic surgery, it was the first from the India. The operation of cataract, couch method, which is today popularly known, is well described in the Shushu Samhita. So, and one thing very important, that cesarean delivery was described very early. And even if the mother is dead and child is alive, how to take out the child and how to keep it alive. The whole process was described. What I am trying to emphasize, to tell you that we are ignorant with our literature. And in my opinion, the science students would have been compulsorily taught the Sanskrit. We lost the Sanskrit language. Therefore, we don't know our ancient sciences, ancient knowledge. Anatomy. The so well described anatomy. I will take only one example. I have given the presentation. Even he described the granular. And the words he used, Shabdava, auditory. Rupva, optic. Sparsva, Gandhava, olfactive. Every kind of cranial nerves were described, and even he also told that if you cut this nerve, what will happen? It means they have elaborated knowledge of anatomy, physiology as well. One very important thing
was the bloodletting. Dr. Opisi was telling you, it was an ancient method that removed blood from the diseased person. There were three methods: Ambalika, Chop, Shangi, or Tumbi. The leeches which he described, poisonous, non-poisonous leeches, name may be different. There are names written here in the presentation. But how to catch them, how to culture them, how to use them in medicine, and how to reuse them to avoid the disease in the leech itself. It has been described in the Sushastalika in a complete chapter. Such type of vivid description is not available even in today's zoology books. I can bet you. Now, various kinds of food items and their metabolic end products have been described. हम क्या खाते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म पे क्या एंड प्रोडक्ट उसका क्या है? जैसे आप बर्फ खाते हो ठंडी है, लेकिन उसकी तासीर गर्म है. तो they imitated at that level. अब तरह तरह के तो मांस का वर्णन है, मीट का. Every kind of animals, what are the characteristics of this meat and that meat and that meat? Even part of the body which is easily digestible, which is not easily digestible, is being described. Like in जो चतुष्पद है, जिनको mammals कहते हैं, चार करोड़. In this, the meat of females is better for digestion, while in birds, meat of males is better than females for digestion. Such kind of fine description, fine availability is available in this society, and we are ignorant, we are unaware. Normally we categorize water, say, with chemical analysis as H2O, but he has described 20 types of waters in this system and how to purify it. Purification process, उसमें भी हमने लिख दिया, तमाम जड़ी बूटियां भी हैं, तमाम methods हैं, ancient methods, purification of the water. Water is not purified with RO. You must know it. Now the WHO has declared RO is a dangerous thing because osteoporosis, which is a symptom of the old age, ladies after 50 is available to the males even by using the RO because you are taking the dead water. Now, one of the fascinating part, toxicology, जिसको विश्व विज्ञान कहते हैं, it has elaborated chapters in this system. And they have categorized two types of poisons, sthawar or jangam. Sthawar from the minerals and plants, jangam from the animals. And both act opposite to each other. He described 60 types of snakes and their venom. And at that level, that even male and female venoms, pregnant female venoms are different in potency and effect. Now you can imagine how it was, how fascinating science was. One thing I would like to quote you, कि पहले खाना खाने के पहले थोड़ा सा आग में डाला जाता है. अब तो पता धीरे धीरे खत्म हो गई लोगों के गाँव में. Can you imagine what was this? Every student of chemistry knows the flame test. It was a flame test to avoid the poisonous food. Binding. And snake venom, anti-serum was first made Albert Kalmaki in 1825. And you must know that when Alexander invaded India, they were not knowing the treatment of snake bite and they called the Indian doctors. And you should also know that about 70 to 80% people, they are dying with the toxicity of antivenom, not with the snake venom. There is a community in the south, Inula. It catches the snakes, sells the venom. They never use the antivenom. They use their own products.
natural birds. Now the researches are going on for the viper snake, Ophiorhynchus munga. There is a plant which has been found effective. Sir, but if there is a critical case, Yes. if there is a life and death scenario, Yes. in a critical case of snake bite, Yes. it's only the antivenom which can save the life. No. If I am wrong, then you can No. correct me. This is also an idea has been infused in our brain. Right, sir. I was skipping due to that time, I but beg I your will answer your I question. beg your pardon. No. There is a tradition in South India community. Even in serious cases, patient gone in the coma, they make 3 incisions in the skull and put the meat of the murga or the bone. This technique is called as cartper, and it is effective even in coma patients. They are not using antivenom at all. और you know the चाणक्य के समय में विष क्रिया तो बहुत इस्तेमाल होती है because ancient technique. And I will tell you the method of WHO, जिसमें snake bite का treatment का जो standard procedure है, it is same with described in the social study, and I can bet it was copied from here. Now, next is the veterinary science. As the dictionary of science available in the CDRI tells that veterinary science is the oldest of India. And in the Sushruta Samhita, there are 2 granths available, Hai Ayurveda and Gav Ayurveda, Gaj Ayurveda. These manuscripts are not available, but references are available, and you must know these were the equipments or the articles for the wars. हाथी और घोड़े, रथ, ये युद्ध के उपकरण थे। 1000 हाथी भी आज घोड़ा पड़ जाए तो मुश्किल है, 1000 घोड़े लाने पड़ जाए तो मुश्किल है। तो I can imagine there would have been some technique for their culture, for their training, for the war. And first wife legislation was built by the Acharya Chanakya in the whole world. Before that, no documented wildlife act is there. Abhi, Dr. O.P. Singh was talking that Ayurvedic ऋतु चर्या और दिनचर्या, आप खाना सुबह जैसे जैसे सूरज चढ़ता है आपकी जठराग्नि बढ़ती है, जैसे जैसे डाउन होता है। ये जो इस तरह का पूरा साइकिल हम लोग बायोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं chronobiology. It may be daily cycle, it may be monthly cycle, it may be annual cycle. So by this you can imagine that the chronobiology was also developed. Biological clock. There was a description that you should pluck the plant parts or the medicine in a different season at a different date. So every component is not available everywhere, every time. So you must be there. So the concept of biological clock was also developed. जो रूप रस गंध और स्पर्श का कॉन्सेप्ट है, गंध वो नहीं जो आप नाक से सुनते, गंध वो है which you feel with your unconscious brain, and in our language we say that it is a pheromone, right? So concept of pheromone was also available at that time. And how to get a good child of our own characters, this has been described in the Sushruta Samhita as well as Charak Samhita. कि हम माँ बाप क्या खाएं तो कैसा बच्चा पैदा हो, ये बाकायदा लिखा हुआ है। और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं उसमें पुत्र प्राप्त करने की विधि लिखी हुई नहीं, पुत्र और पुत्री दोनों को प्राप्त करने की विधि लिखी हुई। अगर वाद से ऊपर उठ कर उसको पढ़े तो दोनों की विधि बाकायदा लिखी हुई। अभी जो अमेरिकन जेनेटिक एसोसिएशन है इसने इस बात को प्रूव किया है कि if the potassium and calcium in the diet is more, then child will be made. And if the magnesium and calcium is lesser, magnesium and calcium will be more, it will be the female.
So it is the nutrient balance which decides the sex of the produce. कुछ चीजें और भी हैं, जैसे निकालना बड़े बड़े पेड़ को ट्रांसफर कर दिया, ये अमेरिकन टेक्निक मानी जाती है। शिशु संहिता में पूरा लिखा हुआ कि बड़े पेड़ों को कैसे ट्रांसफर किया जाए। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो धान की रोपाई की विधि को कहा जाता है जापानी विधि से धान की खेती करना। You go through the शिशु संहिता, you will find the rope पे धान रोपाई करने वाला। तो because we are ignorant in our literature, we don't read it. I can show these photographs to you. They are taken from the temples of the south. Roughly about older, about 2000 years. You can see the embryonic development of the embryo inside the womb. It is on the temples. So, how they saw it? There must be some technique. Though today we don't know. But at least we can think there will be some technique. This is a very important program. You can see a snake is moving inside the round thing. Right? This is the process of fertilization. Sperm and ovum. Now, before the invention of microscope, how they could conceive the exact structure of sperm and ovum and fertilization? This is a big question mark which we should think of. Now, what I am trying to emphasize is that everything which is old is not good. This I don't accept. But researchers must go on. You must verify these things and confirm. But outrightly reject our ancient knowledge is also another level of superstition, which I especially call it scientific superstition. कि टाइम लगा हमने जो कह दिया वही फाइनल है, तो हमारा कहना ही तो साइंस नहीं है, साइंस की डेफिनेशन है, we must conclude it. And as an outset to the students, I can say we are living in information explosion time. But you must know, information is not knowledge. Only structured information is knowledge. Then comes the wisdom and intuition. So your path is very long. You collect the information, structure it, grasp the knowledge, and then increase your wisdom. Then only you can start from the repetitor to the inventor and innovator. Otherwise, you will be always a repetitor. You will produce a paper in a heap of paper. Nobody is going to read it. And last word I will say that all of you are unique. Every human is unique. आप जैसा न आज तक कभी कोई पैदा हुआ था, ना है, ना भविष्य में होगा, क्लोनिंग के सिवाय, राइट? इसी को हमारा कहा गया एको आम भूतियो नास, ना भूतो न भविष्य. So you are deep. You have enormous possibilities with you. Please try to explore without bias. See your literature, see your ancient science, and try to verify it. Thank you. Thank you, Professor sir. I'm really impressed by your lecture. In fact, with your permission, I would like to copy this presentation. I would like to take a copy of this presentation. Thank you very much, sir. May I request everyone, all the delegates and our own faculty staff to please move for lunch. And room number 109. And please try to get back here at 3:15. I know it will be a short time, but please try and get back here by 3:15 because we will resume the rest of the talks and lectures after that. Thank you very much.